Realignment of Security Policy. Muhammad Amir Rana. Published January 1, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. The state institutions made a mistake by deciding to initiate peace talks with the banned Tehrik-i-Taliban Pakistan. The talks were doomed from the start. They allowed the TTP to regain their lost political and operational thrust. Though the suggestion came from the Afghan Taliban, Pakistan's state institutions were more than willing to negotiate with the terrorist group they had time and again declared a defeated entity. The strategic and political reasoning behind the decision is not known. It is important for the new military leadership to re-strategize Pakistan's counter-terrorism policy, as stated in a recent presser issued by the ISPR. Yet, it is the responsibility of the government and the security institutions to decide how these goals can be achieved. It is heartening that a National Security Committee meeting on Friday declared terrorists as the enemies of Pakistan and vowed to respond with full force against those who challenge the country. There should be an open discussion on the country's Afghan policy within and outside Parliament, including on terrorism in Pakistan. Pakistan's support to the first Taliban regime was never a secret. But the Taliban partnered with its enemies, including the Pakistani Taliban, Al-Qaeda, and sectarian terrorist groups operating in the country. The Taliban's current regime in Afghanistan is not much different. Needless to say, Pakistan had high expectations that the Taliban would not only detach themselves from groups like the TTP but also help dismantle these organizations and reintegrate or rehabilitate their cadres. The security institutions made a strategic error when they failed to recognize the ideological bond between the TTP and the Afghan Taliban. Nor did they show keenness to probe the anti-Pakistan sentiments persisting among Taliban commanders and foot soldiers, although Pakistan has remained concerned about the presence of similar sentiments among ordinary Afghans. However, understanding the anti-Pakistan sentiment among the Taliban was critically important, as ideological relationships within the militant groups were also feeding it. Had the security forces studied this single factor, they would not have initiated talks with the TTP. Pakistan's CT mechanism needs constant overhaul as the nature of the threat changes fast. Instead of looking at them as old allies, Pakistan needs to engage with the Taliban in a bilateral state-to-state framework to seek security cooperation. State institutions should not buy into any such argument or narrative by the Taliban that the TTP is Pakistan's internal issue, and they cannot intervene in the matter. This is merely an excuse to tuck away their close ties with the militant group. Pakistan should initiate talks with the Taliban rather than acting on their advice to negotiate with the TTP. The issue's sensitivity requires that such bilateral talks between the two states should be held on a track one basis and avoid any other double or half tracks. Engaging jirgas and religious scholars for confidence-building measures has proved counterproductive so far, and many of the members of such delegations have proved spoilers rather than helping the state reach a consensus. The Taliban regime should rethink what kind of policies towards its neighbors would be productive, providing safe havens to the terrorists, absorbing them into the Taliban fold, or enhancing bilateral and multilateral counter-terrorism cooperation. Terrorism has already caused huge damage to the Pakistani state, to society, and to diplomatic relations. The power elites have to strictly observe a zero-terrorism policy. Any compromise on the terrorism policy can cause big losses to the country and affect the capacity of the counter-terrorism agencies, making them uncertain while conceiving and eliminating the threats. It enhances losses when state institutions soften their tone towards terrorist groups. Pakistan has a functional counter-terrorism mechanism that needs constant overhaul as the nature of the threat changes fast. Still, all counter-terrorism departments should collaborate, and a regular audit of their performance is essential not only for ensuring transparency but also for knowing their response and adaptability if a new or sudden threat arises. National resolve on countering terrorism should be an integral part of the policy.
Though the military and civilian leaderships often stress the point, the practice is different. If former Prime Minister Imran Khan had not mentioned his policy on the TTP during an interview with a Turkish channel, the whole process would have remained secretive for a long time. The more secretive such processes are, the more damage they can cause. The PDM coalition government had blindly endorsed the talks policy, and when the anti-TTP protest started in the Malakand region, the security apparatus and civilian government brought the whole process to the surface. When transparency in the process was demanded, the government said it would take Parliament into confidence for the peace process with the TTP. But it did not happen, nor can the current Parliament initiate any debate on such a crucial security issue. The fact of the matter is that the political leadership has no intention of intervening in security policies, for which it entirely relies on the security institutions. The input from these institutions is significant as security is their core mandate, but decision-making also requires the process to be inclusive. The security institutions took the liberty of adopting such an attitude, but whenever any policy backfires, the civilian government has to take the blame. The blame game over security issues is not new, and political parties deliberately indulge in it to save themselves from probable security threats. There is no difference between the statement made by Mian Shehbaz Sharif in 2010, when he was the Chief Minister of Punjab, and a recent comment by PTI leader Fawad Chaudhry. Shehbaz Sharif had requested the Taliban not to launch attacks in Punjab because both opposed former military dictator Pervez Musharraf. Fawad Chaudhry, in his statement, claimed that Imran Khan was the only respected Pakistani leader in Afghanistan. The reason, he said, was because his hands were not tainted with the blood of Afghans. One can understand the underlying message in his words. Such statements and responses must be scrutinized by Parliament, if not by the party's political leadership. The writer is a security analyst. Published in Dawn, January 1, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. रियासती इदारों ने कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला करके गलती की। मुज़ाकरात शुरू से ही नाकाम हो चुके थे। उन्होंने टीटीपी को अपना खोया हुआ सियासी और ऑपरेशनल जोर दोबारा हासिल करने का मौका दिया। अगरचे ये तजवीज़ अफ़गान तालिबान की जानिब से आई थी, लेकिन पाकिस्तान के रियासती इदारे इस दहशतगर्द गिरोह के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, जिसे उन्होंने बारहा शिकस्त खुर्दा करार दिया था। इस फैसले के पीछे तज़वीराती और सियासी वजूहात का पता नहीं चल सका है। ISPR की जानिब से जारी करदा एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि नई फौजी क़यादत के लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसी की असर-ए-नौ हिकमत अमली तैयार करे। इसके बावजूद ये हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है कि वो ये फैसला करें कि इन अहदाफ को कैसे हासिल किया जा सकता है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशतगर्दों को पाकिस्तान का दुश्मन करार देते हुए मुल्क को चैलेंज करने वालों के खिलाफ पूरी कुव्वत से जवाब देने के अज़्म का इजहार किया गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुल्क की अफ़गान पॉलिसी पर खुली बहस होनी चाहिए। तालिबान की पहली हुकूमत के लिए पाकिस्तान की हिमायत कभी भी किसी से ढकी छुपी नहीं थी, लेकिन तालिबान ने अपने दुश्मनों बशमूल पाकिस्तानी तालिबान, अलकायदा और मुल्क में सरगर्म फिरका वाराना दहशतगर्द गिरोहों के साथ शराकत दारी की। अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदा हुकूमत भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि तालिबान न सिर्फ खुद को TTP जैसे गिरोहों से अलग करेंगे, बल्कि इन तंजीमों को ख़त्म करने और उनके कारकुनों को दोबारा जम करने और उनकी बहाली में भी मदद करेंगे। सिक्योरिटी इदारों ने तज़वीराती गलती इस वक्त की जब वो TTP और अफ़गान तालिबान के दरमियान नज़रियाती ताल्लुक़ को तस्लीम करने में नाकाम रहे। न ही उन्होंने तालिबान कमांडरों और पैदल फौजियों में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात की तहक़ीक़ात करने में दिलचस्पी ज़ाहिर की, हालांकि पाकिस्तान आम अफ़गानों में इसी तरह के जज्बात की मौजूदगी के बारे में फ़िक्रमंद रहा है। ताहम
तालिबान में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को समझना इंतहाई अहम था क्योंकि अस्करियत पसंद गिरोहों के अंदर नजरियाती ताल्लुकात भी इसे खाना खुला रहे थे। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वाहिद उनसर का मुताला किया होता तो वो टीटीपी के साथ बातचीत का आगाज न करते। पाकिस्तान के सीटी मैकेनिज्म को मुस्तकिल तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है क्योंकि खतरे की नौयत तेजी से तब्दील होती है। उन्हें पुराने इत्तेहादियों के तौर पर देखने के बजाय पाकिस्तान को तालिबान के साथ दो तरफा रियासत से रियासत के फ्रेमवर्क में शामिल होने की ज़रूरत है ताकि सिक्योरिटी ताउन हासिल किया जा सके। रियासती इदारों को तालिबान की जानिब से ऐसी किसी दलील या बयानिया को नहीं समझना चाहिए कि टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और वो इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। यह सिर्फ अस्करियत पसंद ग्रुप के साथ उनके करीबी ताल्लुकात को ख़त्म करने का एक बहाना है। पाकिस्तान को टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के लिए तालिबान के मशवरे पर अमल करने के बजाय उनके साथ मुज़ाकरात का आगाज करना चाहिए। इस मामले की हसासियत का तकाजा है कि दोनों रियासतों के दरमियान इस तरह की दो तरफा बातचीत ट्रैक 1 की बुनियाद पर होनी चाहिए और किसी दूसरे डबल हाफ ट्रैक से ग्रेज करना चाहिए। एतमाद साजी के इक़दामात के लिए जिरगों और मजहबी स्कॉलर्स को शामिल करना अब तक नतीजा खेज साबित हुआ है और इस तरह के वफूद के बहुत से मेंबरान रियासत को इत्तेफाक राय तक पहुंचने में मदद करने के बजाय खराबी साबित हुए हैं। तालिबान हुकूमत को इस बात पर दोबारा गौर करना चाहिए कि अपने हमसायों के बारे में किस किस्म की पॉलिसियां नतीजा खेज साबित होंगी। दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें फराहम करना, उन्हें तालिबान के दायरे में शामिल करना, आइंसदा दहशतगर्दी के लिए दो तरफा और कसीर अलजहती ताउन में इजाफा करना। दहशतगर्दी ने पहले ही पाकिस्तानी रियासत, मुआशरे और सिफारती ताल्लुकात को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मुक़्तदिर अशराफिया को सिफर दहशतगर्दी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करना होगा। दहशतगर्दी की पॉलिसी पर कोई भी समझौता मुल्क को बड़े नुकसानात का सबब बन सकता है और इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है, जिससे वो खतरात का तसव्वुर और खात्मा करते हुए गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं। जब रियासती इदारे दहशतगर्द गिरोहों के तई अपना लहजा नरम करते हैं तो इससे नुकसानात में इजाफा होता है। पाकिस्तान के पास इंसदाद दहशतगर्दी का एक फ़ाल मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें मुसलसल तब्दीली की ज़रूरत है क्योंकि खतरे की नौयत तेज़ी से तब्दील होती है। इसके बावजूद इंसदाद दहशतगर्दी के तमाम महकमों को ताउन करना चाहिए और उनकी कारकर्दगी का बाकायदा ऑडिट न सिर्फ शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है बल्कि अगर कोई नया अचानक खतरा पैदा होता है तो उनके रद्द-ए-अमल और मुवाफ़क़त को जानने के लिए भी ज़रूरी है। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से कौमी अज़्म को पॉलिसी का लाज़मी हिस्सा होना चाहिए। अगरचे फ़ौजी और सिविलियन क़यादत अक्सर इस नुक्ते पर ज़ोर देती है, लेकिन अमल मुख्तलिफ है। अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तर्क चैनल को इंटरव्यू के दौरान टीटीपी के बारे में अपनी पॉलिसी का जिक्र न किया होता तो ये सारा अमल तवील अरसे तक खुफिया रहता। इस तरह के अमल जितने ज़्यादा खुफिया होंगे इतना ही ज़्यादा नुकसान उनका सबब बन सकता है। पीडीएम की मखलूत हुकूमत ने मुज़ाकराती पॉलिसी की आंखें बंद करके हिमायत की थी और जब मालाकंड के इलाके में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ तो सिक्योरिटी इदारों और सिविलियन हुकूमत ने इस पूरे अमल को मंजर आम पर लाया। जब इस अमल में शफाफियत का मुतालबा किया गया तो हुकूमत ने कहा कि वो टीटीपी के साथ अमन अमल के लिए पार्लियामेंट को एतमाद में लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही मौजूदा पार्लियामेंट इस तरह के एक अहम सिक्योरिटी मसले पर कोई बहस शुरू कर सकती है। हकीकत यह है कि सियासी क़यादत का सिक्योरिटी पॉलिसियों में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं है जिसके लिए वो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी इदारों पर इन्हिसार करती है। इन इदारों की तरफ से उन पिट अहम है क्योंकि सिक्योरिटी उनका बुनियादी मैंडेट है, लेकिन फैसला साजी के लिए भी इस अमल को शामिल करने की ज़रूरत होती है। सिक्योरिटी इदारों ने इस तरह का रवैया इख्तियार करने की आज़ादी ले ली, लेकिन जब भी कोई पॉलिसी उलझ जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सिविलियन हुकूमत को उठानी पड़ती है। सिक्योरिटी के मामलात पर इल्ज़ाम तराशी का खेल कोई नई बात नहीं है और सियासी जमातें जानबूझकर खुद को मुमकिना सिक्योरिटी खतरात से बचाने के लिए इसमें मुलव्वस हैं। मियां शहबाज शरीफ की जानिब से 2010 में दिए गए बयान और पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के हालिया बयान में कोई फ़र्क नहीं है। शहबाज शरीफ ने तालिबान से दरख्वास्त की थी कि वो पंजाब में हमले न करें क्योंकि दोनों ने साबिक फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ की मुखालफत की थी।
फवाद चौधरी ने अपने बयान में दावा किया कि इमरान खान अफगानिस्तान में वाहिद काबिल एहतराम पाकिस्तानी रहनुमा हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह थी कि उनके हाथ अफगानों के खून से आलूदा नहीं थे। कोई भी इसके अल्फाज में बुनियादी पैगाम को समझ सकता है। इस तरह के बयानात और जवाबात की जांच पार्लियामेंट के जरिया की जानी चाहिए, अगर पार्टी की सियासी क़यादत के जरिया नहीं। मजमून निगाह सिक्योरिटी तज्जियाकार है। अखज़ शुदा बतारीख 01 जनवरी 2023। For more videos, subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.